The question is, of the three independent events E1, E2, E3, the probability that only E1 occurs is alpha, only E2 occurs is beta, and only E3 occurs is gamma. Let P be the probability that none of the events E1, E2, or E3 occurs. Satisfy this given equation. They have given two equations. One is alpha minus 2 beta whole into P equal to alpha beta. And the second equation they have given beta minus 3 gamma whole into P equal to 2 beta gamma. And they're saying that all the given probabilities, that is alpha, beta, gamma, and P, are lying in the interval 0 to 1, so that they can validate the question. Somebody may say that alpha, beta, gamma, where it is lying, it is not given. So they're saying that the probabilities are lying in 0 to 1, means none of them are impossible or sure events. Then we have to find out the ratio of probability of occurrence of E1 by to the probability occurrence of E2. It is an integer type question, so it is going to come as an integer. Okay, question is what we say, it is a moderate type of question. Okay, you see what is the difference, this alpha, beta, and gamma, what they are given as it only E1 occurs. Are you getting it? There is a difference between occurrence of E1 and only E1 occurs. Are you getting it? Hello? That is the catch actually. This only word. Are you getting it? Only E2 occurs is given to be beta. Probability of occurrence of only E2 is beta. Are you getting it? And what they are asking? Probability of occurrence of E2. You are getting it, right? Only E2 and E2. There is a difference. Okay, that is the catch of this question. So what we'll do? We'll take, because we do not know this. Again, so let us assume this. Let probability of occurrence of E1 to be X, probability of occurrence of E2 to be Y, and probability of occurrence of E3 to be Z. Okay, so what they're giving, what are they giving according to question? अब देखो ध्यान से, alpha is what is alpha? Only E1 occurs, right? का मतलब क्या हो गया? Only E1 occurs का मतलब क्या है? E2 और E3 नहीं occur हो रहा है, right? Hello, is it not this? Is it not this? Is it not this? Only only E1 occurs का मतलब यही ना हुआ कि X हमने ले लिया है, probability of occurrence of E1 is X. Okay, getting it now? Hello, I hope you are getting it. Similarly, beta will be, what will be beta? Only E2 occurs. मतलब 1 minus X Y into 1 minus Z. ठीक है? And the same way, gamma will be equal to only E3 occurs. मतलब the other two is not occurring. 1 minus X, 1 minus Y, and Z. Right? Now we'll work on these two equations, what they are giving, this and this. And we'll try to get, what we will try to get? X by Y, right? We have taken this one as X, this one as Y. So our aim is to get X by Y. Getting it? No? Hello? And they're giving two equations. That is the reason why they have given two equations, so that we can get some relation between X and Y, that unknown. Okay? So alpha minus 2 beta, what is it given? Alpha minus 2 beta. According to the question, what is the first equation giving? Alpha minus 2 beta whole into P is equal to alpha beta. This is what it is given. ठीक है, तो अल्फा बीटा हमने निकाल लिया है, तो हम पुट कर देंगे और क्या. ठीक है, तो अल्फा क्या निकाला हमने? only E1 occurs, that is X 1 minus Y into 1 minus Z minus twice of beta. Beta is 1 minus X Y into 1 minus Z. Okay, now what is P? What was P? P दिया हुआ था. P क्या था? What they have asked, what they have given that P is, you see, let P be the probability that none of the events E1, E2, E3 occurs, right? So is it not 1 minus X
into 1 minus y into 1 minus z. Is it this? Is it this? None of e1, e2, e3 occurs. नहीं, क्या होगा? e1 भी नहीं हुआ, e2 भी नहीं हुआ, e3 भी नहीं हुआ, तो क्या होगा? 1 minus x into 1 minus y into 1 minus z होगा. Is it or not? Hello, is equal to alpha beta given. Yes, sir. Alpha into beta. तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? एक्स वाई इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर. एम आई राइट? अब देखो, none of these probabilities are zero, so their complement are also not going to be zero, right? Hello, getting it? Hello. Yes, sir. They have said 0 to 1. All the probabilities are lying between 0 to 1. Means none of the probabilities is 0. So their complement also cannot be 0, right? So this 1 minus x I can argue that this 1 minus x can be cancelled because they are not going to be equal to 0. Getting it? Getting the point? Hello. Yes, sir. और ये इसमें से तो मैं 1 minus z कॉमन ले ही सकता हूँ, और यहाँ एक 1 minus z रह गया है, वो कैंसिल जाने के लिए तैयार है. समझ गया ना? हेलो, ठीक है Yes. भाई? हाँ, अभी मल्टीप्लाई कर देते, 1 माइनस जेड को बाहर कर देते हैं और देखो ना, मल्टीप्लाई करो x माइनस एक्स वाई. यहाँ क्या रह जाएगा? 1 माइनस जेड बाहर जाएगा, माइनस ऑफ 2y प्लस ऑफ 2xy रहेगा शायद. देखते रहना, मेरा कैलकुलेशन कभी कभी इधर हो जाता है. ये 1 माइनस जेड, ये 1 माइनस जेड भी उसी लॉजिक से कैंसिल होगा. होगा नहीं होगा? अब क्या रह गया है हमारे पास? इधर पे एक xy, इधर पे एक xy. अच्छा, xy कैंसिल गया, x इक्वल टू 2y आ गया भाई. नहीं, so x by y equal to 2 by 1 implies probability of e1 by probability of e2 equal to 2 by 1. What they have asked for? अच्छा, ये probability of e3 पूछा था ना, मैंने गलती कर दिया. They have asked for p1 by e3, e1 probability of occurrence of e1 by probability of occurrence of e3, sorry. So they have asked for x by z, so I have got x by y, so this is not going to work, right? समझ में आया ना? x by y e1 by e2 पूछते तो यही आंसर था, सेकेंड इक्वेशन का कोई जरूरत ही नहीं था. ठीक है, but they have asked for e1 by e3, so we have to go for the second equation. Can you do yourself again? It is the same way. Beta minus 3 gamma whole into p was given to be equal to, I think, beta gamma, twice beta gamma, twice beta gamma, twice of beta gamma. ठीक है, तो क्या होगा? बीटा क्या था? बीटा क्या था? बीटा 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 1 minus x y 1 minus z, 1 minus x y 1 minus z minus 3 gamma. gamma was z होगा, बाकी दोनों नहीं होगा, मतलब 1 minus x 1 minus y into z. Similar equation you are going to get, देखो, 1 minus x 1 minus y 1 minus z, and here you are going to get twice of beta gamma, means you will be getting twice of 1 minus x y 1 minus z 1 minus x 1 minus y into z. ठीक है, अब देखो क्या क्या कैंसिल किया, वो कैंसिल आउट कर लेते हैं. जो जो कैंसिल जाएगा, 1 minus x 1 minus x 1 minus y 1 minus y 1 minus z 1 minus z कैंसिल किया, तो जो रह जाएगा उसको लिख लेते हैं. अच्छा, 1 minus x भी कैंसिल जाएगा, एक कॉमन ले लेंगे 1 minus x यहाँ से, और जो रह जाएगा इसमें लिखते हैं y minus yz, और यहाँ रह जाएगा तुम्हारा minus 3z प्लस 3yz, और इधर रह जाएगा 1 minus x into twice yz. बहुत बढ़िया, 1 minus x भी कैंसिल जाएगा भी, twice yz 3yz, नहीं 2yz कैंसिल किया, y इक्वल टू 3z मिला. सही है ना? हेलो, सही है ना? Yes, y sir. by z इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? y by z इक्वल टू 3 by 1. अब ये हो गया b, तो मुझे क्या चाहिए था? x by z चाहिए था, तो डिवाइड कर देते हैं. x by z ना चाहिए कि मल्टीप्लाई कर देते हैं?
Therefore, A into B implies x by z cancel जाएगा y और यहाँ मिलेगा 6. So this is the required answer. ठीक है, समझ में आया? Hello, hello. Yes, sir. Okay, let us go for the next question. This question is also a very good question. Football teams T1 and T2 have to play 2 games against each other. Against each other. It seems, sorry, it is assumed that the outcomes of the 2 games are independent. Okay, the probabilities of T1 winning, ड्रॉइंग माना ड्रॉ होना है ना, and losing a game against T2 are 1/2, 1/6 and 1/3 respectively. ठीक है, each team gets 3 points for a win, 1 point for a draw, and 0 point for a loss. Let X and Y denote the total points scored by teams T1 and T2 respectively. ये पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है. Then after 2 games, क्वेश्चन 1 दिया है, probability of x greater than y is, your options are A 1/4, B 5/12, C 1/2 and D 7/12. We'll read the question carefully. It's a relatively easy question. Football teams T1 and T2 have to play 2 games against each other. It is assumed that the outcomes of the 2 games are independent. First game, second game are independent. Second game's what is it called? Outcome is not going to be dependent on what happened in the first game. That is the meaning of independence. It means in this question, the probability of T1 winning, drawing or losing a game against T2 are given to be 1/2, 1/6 or 1/3 respectively. It is straightforward, nothing to be uh, nothing to be worried about that sentence. Each team gets 3 points for a win, 1 point for a draw and 0 point for a loss. Let X and Y denotes the total points scored by team 1 and team 2 respectively. Then after 2 games, probability that X is greater than Y is which one of this? X greater than Y means what? The team 1 has to score more points than Y, right? Is it that? Is it not that?
This means that only points of team 1 is greater than points of T2. That is the meaning. Probability of this only. Hello. Yes, हेलो sir. इज इट? हाँ, तो क्या क्या हो सकता है बताओ तो। ये एकदम ही आसान है, x ग्रेटर देन y। कौन सा केसेस में हो सकता है, मैं एक बता देता हूँ तुमको कि टीम 1 ने फर्स्ट मैच भी जीत लिया, सेकंड मैच भी जीत लिया, है ना। आफ्टर 2 गेम्स बोला है ना, आफ्टर 2 गेम्स, है ना। तो इसमें भी कितने पॉइंट मिल गया उसको, 3 पॉइंट मिल गया, इसमें भी 3 पॉइंट मिल गया। और तब टीम 2 को क्या मिला है, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो टीम 1 का ज्यादा हो गया। Are you getting it? This is one of the case. Yes, sir. Can you tell me one more case? Draw. एक Draw. विन किया, एक ड्रॉ किया। हाँ, टीम 1 ने फर्स्ट मैच जीता और सेकंड मैच ड्रॉ कर लिया। और क्या हो सकता है, फर्स्ट मैच ड्रॉ खेला, सेकंड मैच जीत लिया, ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है ना। ये दोनों केस लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि sir. बोथ मैचेस आर डिफरेंट, राइट। और कुछ हो सकता है क्या, और कुछ हो सकता है क्या? दोनों और मैच कुछ? ड्रॉ। दोनों मैच ड्रॉ होगा तो इक्वल इक्वल पॉइंट्स हो गया भाई, नहीं हो गया। दोनों मैच अगर ड्रॉ हो जाएगा, इक्वल इक्वल पॉइंट्स नहीं हो जाएगा, पॉइंट्स तो इक्वल हो जाएगा ना। दोनों मैच ड्रॉ Yes, होगा sir. तो दोनों को कितने पॉइंट मिलेंगे, दोनों मैच ड्रॉ होगा तो दोनों को 2-2 पॉइंट मिलेंगे भाई, नहीं। हेलो, कि एक एक पॉइंट मिलेंगे, Yes, एक sir. एक पॉइंट मिलेगा, एक एक पॉइंट मिलेगा दोनों को, ठीक है। समझ में आ गया ना। हेलो, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस इक्वल, had it been equal we would have taken, but equality not given, ठीक है, ठीक है। तो these Yes, are sir. independent, already they have said that these are independent। और तुमको क्या चाहिए, T1 का विनिंग का प्रोबेबिलिटी, ये विन ना, T1 मतलब T1 विनिंग लिख रहा है ना, नहीं। और ड्रॉ का तो दिए के रखा है वो प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 विनिंग व्हाट वाज दैट, T1 winning was 1/2, है ना। winning is 1/2, right, and drawing is 1/6 and losing is 1/3, that is what it is given for team 1। so it is 1/2 into 1/2, समझ में आ रहा होगा तुमको। प्लस ये 1/2 into 1/6, और ये भी वही होगा, into 2 कर देते हैं यहीं पे, क्यों भाई, समझ में आया? हेलो, तो ये कैलकुलेट Yes. करो, 5/12 आएगा, बस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अब तो सेकंड क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ क्वेश्चन था। द सेकंड क्वेश्चन यू विल बी ट्राइंग योरसेल्फ एंड आई विल गिव यू सम टाइम फॉर दैट एंड यू विल गेट 2 मिनट्स फॉर इट। जल्दी कैलकुलेट करो, px equal to y, px equal to y। I'm writing the options, by the time I write the options your answer should come। 11/36, b 1/3, c 13/36, and that of d, that option d is 1/2। क्या चाहिए अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू y, मतलब टीम और टीम 2 का, टीम 1 और टीम 2 का पॉइंट्स इक्वल होंगे। क्या केसेस में होंगे बोलोगे? एक तो हमको यहीं पे पता चल गया था, प्रोबेबिलिटी था दोनों ड्रॉ खेलेंगे, ये तो हो ही गया। और है क्या कुछ, और कुछ हो सकता है क्या? p t1 t1 डैश, t1 डैश मतलब t1 हारा तो मतलब t2 जीता, नहीं। हेलो, Yes. है ना, हम t1 डैश ले रहे हैं क्योंकि t2 का नहीं दिया है प्रोबेबिलिटी, T2 का प्रोबेबिलिटी विनिंग नहीं दिया है डायरेक्टली, नहीं, हम भी ऐसे लिखेंगे T1 डैश T1, यही ना होगा, Yes. यही ना होगा, समझ में आ Yes, गया, sir. है ना। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो मेरे हिसाब से आएगा 13/36। इतना आसान क्वेश्चन दिया था देखो, दिस वाज द करेक्ट आंसर। ओके, the next question will go for the next question। next question is this 3
randomly chosen non-negative integers x, y, and z are found to satisfy the equation x plus y plus z equal to 10, then probability that z is even is which one of these? Option A 1 by 2, option B 6 by 11, option C 5 by 11, and option D 36 by 55. I think you have done this kind of question in permutation and combination in class 11. कुछ याद है क्या? Can you tell me what will be the total number of non-negative solutions of this equation? मतलब favorable total outcome. Total outcome is total number of non-negative integral solution of x plus y plus z equal to 10. Anybody know this formula? Anyone? 10C3. हाँ, n plus r minus 1 c r minus 1. क्या होगा ये? नहीं होगा. 12c2 होना चाहिए मेरे हिसाब से. What is n here? 10. What is r here? 3. 10 को 3 पार्ट करना है. ये ऐसे ऐसे पढ़ते देखो कैसे हुआ. 10 को 10 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 10 equal things are there. 10 things are there. Identical 10 things are there. I have to make 3 part, right? एक part x, एक part y, एक part z. नॉन नेगेटिव मतलब जीरो भी हो सकता है. तो इज इट नॉट देखो कैसे आया, ये कैसे आया, ये जो फॉर्मूला है ना तुमको हमेशा के लिए याद हो जाएगा. तुम मेरी बात सुनो ध्यान से. अब कितने हो गया? पहले कितने थे? 10 पार्ट थे एंड हमने 3 इक्वल पार्ट में उसको बांटना. 3 पार्ट में बांटना है, नॉट इक्वल. 3 पार्ट में हमको बांटना है. तो दे कैन बी जीरो ऑल्सो, है ना. दैट इज नॉन नेगेटिव का मतलब वही हुआ ना. नॉन नेगेटिव मतलब इंक्लूडिंग जीरो, राइट? हेलो Yes, Yes, sir. sir. 0,0,0 is also a solution. That is the meaning. ठीक है 0,0,0 can be a solution, not it is a solution, but that can be a solution. In this case it will be either 0,0,10 or 10,0,0 or 0 10 0. समझ में आ रहा है? हेलो, नॉन नेगेटिव का Yes, मतलब वो sir. हो गया. ठीक है, अब देखो इसको कैसे करते हैं. तो इज इट नॉट ये जो सिचुएशन मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये जो सिचुएशन मैंने ड्रॉ करके रखा है, क्या ड्रॉ करके रखा है? आई हैव गिवन हियर 10 dashes and 3 green vertical lines. Will it not be equal to the arrangement of 13 objects? कहां से 13 हुआ? कहां से 13 हुआ? कहां से 13 हुआ भाई? 10 प्लस हमने 3 पार्ट, अच्छा 3 पार्ट करना था, है ना. हमने तो 4 पार्ट कर दिया. कोई किसी ने नहीं बोला सर 3 पार्ट करना था, आपने 4 पार्ट कर दिया, क्यों नहीं बोला? 3 पार्ट तो अभी हो रहा है ना. ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट हो गया, नहीं हो गया? अभी ना 3 पार्ट हुआ, मैंने 3 दे दिया था और किसी ने कुछ नहीं बोला. आर यू गेटिंग इट? ये तो 4 पार्ट Yes, हो sir. जाता Yes, sir. मतलब. हाँ हाँ हाँ, ये गलत हो गया था. अब 3 पार्ट तो हो ही गया. दो हम वर्टिकल लाइंस खींच दिया तो 3 पार्ट हो ही गया.
ठीक है. So how many ways it can be done? By 12 factorial. Total 12 factorial कहाँ से हुआ? 10 plus 2, उसमें से dash 10 are of one kind and 2 are of the second kind. What this 2 means? 2 vertical lines. समझ में आ रहा है? And 10 dashes. समझ में आया? तो this one is nothing but, ध्यान से देखो, this is nothing but 12C2. और इसका क्या है? देखो क्या किया था हमने? 10 को हमने 3 पार्ट किया था, -1C3 - 1. समझ में आया? ये फॉर्मूला है. ठीक है. इसको ऐसे याद रखो या ऐसे याद रखो, तुम्हारा मर्जी. ठीक है. इट इज स्ट्रेट अवे कमिंग आउट ऑफ दिस. ठीक है. और याद रखना ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए. दिस थिंग्स शुड बी, ये फॉर्मूला वर्क कभी तभी करेगा फॉर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस. नॉन नेगेटिव मतलब दैट मस्ट इंक्लूड द जीरो. दिस फॉर्मूला विल वर्क ओनली देन एंड ओनली देन. याद रहेगा? ठीक है. तो टोटल आउटकम क्या हुआ? यही हुआ, यही ना हुआ? 12C2 मतलब क्या हुआ? 12 into 11/2, right? हेलो हेलो Yes. हेलो. Yes, sir. 66. तो यही में से आंसर मुझे पता चल गया होगा. 66 या तो ये होगा, नहीं तो ये होगा. ये दोनों में से कोई एक होगा. अब देखो यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है. एक्चुअली फेवरेबल आउटकम में तुमको जो सीखना है, फेवरेबल आउटकम में सीखना है. टोटल आउटकम बहुत लोग निकाल लेंगे. फेवरेबल आउटकम, अब देखो फेवरेबल आउटकम अब होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? वो क्या बोला है? व्हाट इज फेवरेबल आउटकम? देन प्रोबेबिलिटी दैट z इज एन इवन नंबर. x प्लस वाई प्लस z में z क्या होना चाहिए? इवन बोल दिया. Are you not getting it? मतलब z equal to, can I not take as 2x where x belongs to w? Hello हेलो 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 हेलो. Yes. अच्छा x नहीं, x नहीं, x नहीं, n कर देते. x पहले से है, x पहले से है, x यहीं पे है ना, कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है. Can I not take z to be 2n where n belongs to w? w मतलब including 0. हेलो 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 हेलो. Yes, गेटिंग sir. इट? अब Yes. अगर z n इक्वल टू 0 हुआ तो क्या सोल्यूशन मिलेगा? x प्लस वाई इक्वल टू 10. कितने सोल्यूशन है बताओ, जल्दी बताओ. कितने नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन? हाउ मेनी नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन? देखो कितने पार्ट कर रहे हैं हम? 2 पार्ट. 10 प्लस 2 - 1/2 - 1. समझ में आया? हेलो हेलो. Yes, sir. ना ये किसके लिए हुआ? n इक्वल टू 0 के लिए. n इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा? और जल्दी बोलो. x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 10, राइट? मतलब क्या हुआ? x Sir, वो प्लस वाई 11 इक्वल टू, C1 नहीं. हाँ हाँ हाँ, Sir, n is equals to 0 में 11C1 होगा ना. कैसे 11C1 होगा? 10 2 minus 10 को कितने पार्ट बता रहे हो? 2. अच्छा हाँ हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, एग्जैक्टली, प्रिंटिंग मिस्टेक, सॉरी. थैंक यू. हाँ बताओ इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? 8 प्लस 2 - 1 C2 - 1 नहीं? Yes. तो इसमें 9C1 होगा नहीं? हेलो Yes. हेलो. अब कहाँ Yes. तक जाएगा ये बताओ? ये कहाँ तक जाएगा? ये सिलसिला कहाँ तक जाएगा? सिलसिला कहाँ तक जाएगा? 1 तक जाएगा, उससे ज्यादा तो जा नहीं सकता, निगेटिव हो जाएगा. हेलो. Yes, sir. तो फेवरेबल आउटकम कितना हुआ? कितना हुआ? 11 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1. कितने हुए? कितने हुए ये? Is it not 36? Yes. Therefore required Yeah. probability. Required probability हुआ 36/66, that is 6/11. वो दोनों में से एक था, तो यही था. तो यहाँ सीखने वाली बात तुम्हारा ये है जो मैंने तुमको बताया. आई होप यू आर गेटिंग इट. हेलो
Are you getting it? Yes. Okay, we have very less time. We'll go for the next question. There are 5 students. It's a very good question. There are 5 students. Names are given: S1, S2, S3, S4, and S5 in a music class. And for them, there are 5 seats: R1, R2, R5, arranged in a row where Ri is allotted to the student Si. मतलब R1 सीट S1 के लिए, R2 सीट S2 के लिए, and so on for I equal to 1, 2, 3, 4, 5. But on the exam day, the 5 students are randomly allotted the 5 seats. Okay. The probability that question 1 EAP paragraph type है. First question is the probability that the student S1 gets the previously allotted